गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडिफाइड अग्निवीर के बारे में विद जनरल कुलकर्णी, राइट? एंड लेट मी फर्स्ट वेलकम जनरल कुलकर्णी। गुड इवनिंग संजय, लॉन्ग टाइम हमने मिले नहीं, तो इट्स सो नाइस टू मीट यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। Sir, good evening. Jai Hind, and definitely जय always हिंद। a pleasure to be with you, sir. या All your podcasts, all your this thing are well received, and I think everybody is looking forward to what next from you coming. I think it's wonderful. ah Always a pleasure, sir. look, oh thanks a lot, but the thing is what's next coming is from Pakistan. हमारा क्या है, पाकिस्तान करता है सब कुछ। so, so, so And today Pakistan we're going to is discuss. yes. Yeah, We'll discuss that, sir. We'll discuss that yeah, also, sir. Besides yeah. Agniveer, sir. अग्निवीर। So आज जैसे हम सबको पता है, हम अग्निवीर के बारे में बात करना चाह रहे थे, पर पाकिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं, तो आज हमने सोचा कि थोड़ी देर पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, फिर अग्निवीर में जाएंगे। तो आज जैसे सबको पता है 5 इंजीनियर्स मारे गए एक सुसाइड बॉम्ब में, और ये रिपोर्ट है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। चाइना में तो गुस्सा होगा ही। ये तीसरा अटैक है, मेजर अटैक है। अगर आपको पता है, याद है तो सबको, लास्ट ईयर देयर वाज एन अटैक इन व्हिच 7 पीपल डाइड अगेन इन दासू इन द सेम एरिया, and then there was in the Karachi Chinese center, in the Karachi University, in one of those Confucius centers, there was a blast in which I think a lot of people died. I don't remember the thing, and this is the third major thing where people have died. But more importantly, we know yesterday there was a major attack in Turbat in Balochistan. And before that, just 1 week before that, there was a strike in Gwadar. And Nikkei Asia reports this attack in the heart of China's interests. That's at Gwadar. We all know that. So this is something which is happening, and if I put this map on, अगर हम देखेंगे तो ऊपर दासू है प्रोजेक्ट, नीचे तुर्बत है, उसके नीचे ग्वादर है, वो आया नहीं. But then these three attacks have taken place in the past 1 week, and that green dot is that cross-border airstrike which Pakistan carried out in Paktika in Afghanistan. So very unusual things happening. So far, so much what we know is the attacks on Turbat and Gwadar, they are being carried out by BLA, and the one at Chinese attack on Dasu can't be BLA. It has to be either TTP or someone, local thing. But we'll have to see where it goes. Unusual, expected, everything. So, what are your reactions about this, Sanjay? We'll discuss this, and where do you see this going, and what does it portend, and then we'll get to Agniveers. What happens is Pakistan has been under stress. Nawaz Sharif has been saying that ever since he has been ousted in 2017, primarily by Bajwa and Imran Khan, and all that what is happening now in Pakistan, he attributes it to them. And his return also has been a problem because now the Tehreek-e-Insaf Pakistan, the Imran's party, seems to feel that उनका जो 2/3 मेजोरिटी था वो नवाज शरीफ और भुट्टो पीपीपी ने मार दिया. सो एक तरफ इमरान खान को लगता है कि उसका हक मारा गया, एक तरफ नवाज शरीफ को लगता है कि उसको इमरान खान और बाजवा ने मिलकर बाहर निकाला. इसके ऐसे पॉलिटिकल सेटअप पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका सपोर्ट तालिबान से है, और फिर उनके जो चंद एक और जो आउटफिट्स थे जैसे तहरीक जिहाद एंड अंसरुल जिहाद, सम ऑफ देम बैक्ड अप बाय
अल-कायदा जिन्होंने हमला किया, उनके मस्जिदों में हमला किया, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने मारा। फिर ईरान और पाकिस्तान के बीच में अनबन, उधर अटैक एक दूसरे ने किए। फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तालिबान सपोर्टेड तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले किए सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और इन सब हमलों में अधिकतर देखा गया या तो पाक के नेवल बेसिस के ऊपर हमला हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमला हुआ, या फिर उनके एयर बेस को हमला। ऐसे जबरदस्त हमले, एक वक्त के 3 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए, दूसरी बार नेवल एयर बेस पे 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए, इस बार फिर से सुसाइड अटैक जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेवल बेस के ऊपर हुआ। अब ये कहते हैं माजिद गोरिल्ला टास्क फोर्स, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इज अपसेट विद देम फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट दे आर डूइंग इन कनाइन with China at Gwadar. Tehreek-e-Taliban Pakistan is doing it for all what Pakistanis have thrown out all the what could be said as unregistered Pakhtuns from Pakistan. So they are upset over there. With Iran, they seem to feel that some of these bases from Iran are attacking Pakistan. Pakistan feels that most of these Baluchis are taking shelter into Iran. So there's a real hodgepodge in Pakistan at this point of time, and Pakistan is on the back foot, primarily of its own doing, because of radicalization, of trying to support terrorism and using terrorism as an instrument of state policy. और जैसे मिसेस क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर आप सांप पालेंगे अपने बैकयार्ड में और ये सोचेंगे कि सिर्फ पड़ोसी को ही काटेंगे तो गलत है, वो तो आपको भी डसेंगे। और अब वो सांप पाकिस्तानियों को डसने पे आए हैं। उनके सिक्योरिटी फोर्सेस में जो हमला हो रहा है, 1-2 नहीं मारे जाते, कहीं पर 30 मारे गए मस्जिद के अंदर, कहीं 23 मारे गए। सो देयर हैज बीन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन Pakistan security forces. The colonels have died, the youngsters, majors have died. So there is, and you find the coffins of a colonel being accompanied by the president. Zardari was part of it. The chief of the army staff, Munir, he was part of the this thing coffin carrier. So you find that there is a lot happening in Pakistan. Pakistan under tremendous pressure, primarily because the Balochistan Liberation Army feels that China is taking away all the resources and leaving nothing for the Baluchis over there, and all this in alliance with Pakistan. There, the Tehreek-e-Taliban Pakistan feels that yes, the supporter group Taliban, which has left behind huge American weapons, they're being used against this thing. Iran is upset with Pakistan because of what it has been doing over there. So Pakistan security forces are on the back foot. And what being attacked? Naval air bases, and the Gwadar port. So, and Chinese under tremendous amount of pressure, they wouldn't know. And Majid Brigade of Baluch Liberation Army is a guerrilla task force. And look at the way they उनका operation करने का तरीका देखियो. The suicide bomber is going there, and after the suicide bomber is killed at the main guard, the rest of them barge in and kill people and destroy 2 American aircrafts lying there at the naval air base. So you see the kind of tactics being employed, the kind of pressures being put for Pakistan army. They really don't know from which side they're going to be attacked. And this particular strike has come from 3 parts of the airfield onto the naval air base and being attacked. Though Pakistan कह रहा है कि उनके कोई aircraft को नुकसान नहीं पहुंचा है. Well, that is the Pakistani way of saying, but chalo, presuming what they're saying is right, nahi hua, but the very fact that some of their security forces have been injured, dead, killed, it's a big pressure. And Pakistan economically shattered, militarily on the back foot. Their militant organizations are taking the backside of Pakistan, and they don't know what's hitting them from all over. And I think Pakistan now is paying for its own, kind of, I would say, absolute their own sins. A big way, a very, very big way. The sins. Now they can't blame India at all. They themselves are not blaming India. They know it, that it is not India. It is their own doing. It is their own, what they sow, so shall they reap. And this is what Pakistan is now reaping. Yes. Yeah. मैं इसके बारे में कुछ सबको बताना चाहता हूँ. अगर आप देखेंगे, जैसे जनरल कुलकर्णी ने भी बताया, यहाँ 3 तरीके के अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना?
एक है बलूच रिबल्स जो है वो साउथ में ग्वादर के इलाके में और बलूचिस्तान में अटैक कर रहे हैं। दूसरा नॉर्थ में, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो अटैक हुआ दासू डैम, वो नॉर्थ में है, खैबर पख्तूनवा में है। वो अभी तक किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया कि ये क्या ये टीटीपी के हैं या कुछ मिलिटेंट्स हैं, क्या है, वो पता चलेगा। पर जहां तक मेरे ख्याल में ये टीटीपी के ही लोग होंगे और वो भी सुइसाइड बॉम्बर्स। ठीक है, राइट। और तीसरा है बॉर्डर के ऊपर। तो आप देखिए बलूचिस्तान जो सबसे नीचे प्रोविंस है वहां प्रॉब्लम है, ऊपर प्रॉब्लम है, और ऑन द बॉर्डर ड्यूरैंड लाइन के ऊपर प्रॉब्लम है, और चौथा इसका कड़ी है वो ईरान के बॉर्डर के भी प्रॉब्लम है। तो आप किस तरीके से देखिए पाकिस्तान को दिक्कत है। मेरा मानना ये है कि बहुत साल से मैं ये बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के तीन फ्रंट हैं। एक फ्रंट है ईस्टर्न फ्रंट, एक है वेस्टर्न फ्रंट अफगानिस्तान के साथ, और तीसरा फ्रंट इनका एक्चुअली सेंटर में है, और वो फ्रंट है सीपीसी। क्योंकि मेरा मानना ये है, ये अभी नहीं, मैं 4 साल पहले इसके बारे में लिख चुका हूँ कि ये सीपीसी जो है वल्नरेबल है, राइट। और सीपीसी के संबंधित जो भी कार्रवाई होती है वो सब वल्नरेबल है, राइट। अच्छा, ये क्यों वल्नरेबल है ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो सीपीसी लोग मानते हैं उनके लिए काम नहीं कर रहा है। ये चंद लोग जो पंजाब से हैं उनका उनके लिए पैसा बन रहा है। पंजाब प्रोविंस के लिए अच्छा है सीपीसी, पर जहां तक खैबर पख्तूनवा हुआ या बलूचिस्तान का हुआ उनको कोई फायदा नहीं है। एक नंबर दो, एक देर इज वन थिंग कमिंग आउट इन दिस constant attacks on Chinese and Chinese manufactured, Chinese bases and things like that. The people of Pakistan don't want China or don't like Chinese in their area to be operating, which is coming out very clearly. And I think this is a weakness which we should not, lose sight of. Okay. एंड दिस इज, ये मेरा मानना ये है, और ये साबित भी हो गया। मैं क्योंकि मैं क्यों मानूं, जब 5 चाइनीज मर गए और 1 घंटे के अंदर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में अगर आर्टिकल निकल रहा है तो दे आर वरीड अबाउट दिस होल स्टोरी। ठीक। तो ये जो कहानी पाकिस्तान के अंदर ये बहुत साल चलने वाला है, राइट। अगर आप आज के दिन देखेंगे तो सबसे पीसफुल बॉर्डर कौन सा है, सबसे पीसफुल फ्रंट कौन सा है? इंडिया फ्रंट, राइट। इंडिया फ्रंट सबसे पीसफुल है। तो ये है स्थिति पाकिस्तान का। इस सिलसिले में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। रिसेंटली पाकिस्तान हैज मेड एन आउटरीच कि भाई हम आपसे ट्रेड करेंगे, हमारे आपके साथ वी वुड लाइक टू इम्प्रूव रिलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ये उनका प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, और उसका नया नियुक्त किया हुआ फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला। पर बात यह है कि वो कश्मीर का रट तो छोड़ते नहीं है। ये तो नहीं बोलते ना, वो जैसे कोई भी बोलो बातचीत करना, हाँ ये सब हम करना चाहते हैं पर पहले कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो इस हालत में, और ये मौजूदा सिक्योरिटी का हालत जो पाकिस्तान में बिगड़ा हुआ हालत में, इसमें हमारा क्या ओवरऑल राय या रादर रवैया होना चाहिए, उसके बारे में जरा बताइए। सर, आपने बहुत ही यू नो कॉट द बुल बाय द हॉर्न। द प्रॉब्लम इज ओनली देयर। अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी सर्वाइवल इज ऑन कश्मीर। मतलब दे वांट टू शो, अगर भारत के साथ उनका अगर कोई एक एम है, इट इज टू टेक बैक कश्मीर। वन पॉइंट एजेंडा, हेट इंडिया एंड कश्मीर। अगर कश्मीर प्रॉब्लम डेड हो गया, there is no requirement for Pakistan army at all. So वो Pakistan army to show its existence, to show that पाकिस्तान की जरूरत ये है पाकिस्तान की फौज, जबकि पाकिस्तान की फौज जरूरत थी उनके खुद जो प्रोविंसेस हैं, तरह तरह के उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे पंजाब में है, चाहे खैबर पख्तूनवा में है, वो उनके अपने प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करके इंटरनल के लिए। पर जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ने चोरी से
aid लेकर के diverting the funds which came for earthquake, for modernizing the Pakistan army, हमें establishment of the ordnance factories, जिस प्रकार से ड्रोन्स बना रहे, जिस तरह से न्यूक्लियर होने की कोशिश, न्यूक्लियर में भी उसमें भी क्लैंडस्टाइनली चीन से मदद ले रहे, नॉर्थ कोरिया से मदद ले रहे, ये सब दर्शाता है कि उनका मकसद है, the very existence of the Pak army is to fight the Indian army or to deter the Indian army or the fear that एक तरीके से fear psychosis पाकिस्तानियों के बीच में कि भारत जो है वो पाकिस्तान को खा जाएगा और कुछ नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान आज की तारीख में सब जगह से गिरा है अपने आप को। अगर if it finds itself safe, it is only against the Indian border. मतलब only along the Indian international border and along the LOC that Pakistan finds itself, even along the AGPL on Siachen where you are face to face. We are still at say Pakistanis can actually divert troops to ensure their very existence. Pakistan ke existence is under threat because Pakistanis don't know. Reason, Pakistan army is 95% Punjabis. Those Punjabi army of Pakistan is not in consonance with the people of Pakistan. The Sindhis don't like them. The Khyber Pakhtunkhwa don't like them. The Baluchis don't seem to at all gel with them. Pakistan army, अब आप देखिए CPEC के अंदर चाइना के बरखिलाफ जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं ग्वादार पोर्ट में, चाहे वो उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हो, चाहे उसका ग्वादार पोर्ट एस्टैब्लिशमेंट अथॉरिटी हो, ग्वादार का जो this port authority was controlled by whom? By a lieutenant general of the Pakistan army. So you find all of these activities that are going on are something which the पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी कहें, अगर पंजाबी ही पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान is divided because you'll find the Baluchi is not in sync with the Punjabi is not synced with Sindh, the Sindh is not in sync with the rest of it. तो ऐसे हालात में अगर हम देखें, पाकिस्तान जो है वो जानता है कि एक हिंदुस्तान, ऐसे इसमें अब पाकिस्तान की जो फौज है वो पॉलिटिशियंस को भारत के साथ बात नहीं करने देगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ट्रेड एस्टैब्लिश हो गया तो फिर उनका द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी स्टैंड्स डिफीटेड। तो वो द रिमोट कंट्रोल जो है पाकिस्तान का वो है पाकिस्तान आर्मी के पास। इसलिए आप बार बार देखें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो भुट्टो हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान कश्मीर का जो मुद्दा है उसको अपना बड़ा मेन मुद्दा समझ करके, जबकि पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और इस तरीके से बार बार वो सोच रहे हैं कि अगर उनका एक किसी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ मिलन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, उनकी बिजली ले ली, उनका पानी ले लिया, उनको गरीब के गरीब रख दिया, खाने को नहीं, पीने को नहीं, सब कुछ, द डैम, द वाटर इज ऑल देयर। द सीपीईसी प्रोजेक्ट हैज गॉट सो मेनी पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान बलूचियों को क्या मिला? वो तो उनकी जो बेसिक ट्रेड था मछली पकड़ना वो भी बंद कर दिया, क्योंकि चाइनीज हैव ऑक्यूपाइड द एंटायर, सो ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स एन आइलैंड which the Chinese have occupied. अब उसमें तो पाकिस्तानी भी नहीं घुस सकते। Pakistan has employed one division for the safety of the Chinese in Pakistan working along the CPEC. क्या हुआ? कुछ नहीं, चाइनीज तो मारे जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, चाहे कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चाइनीज मारे गए, अभी इस बार फिर चाइनीज मारे गए। ड्राइवर कौन है? पाकिस्तानी। उधर ड्राइवर कौन था? पाकिस्तानी। पैसेंजर्स कौन थे? चाइनीज। तो मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो है भारत ने वेट एंड वॉच पॉलिसी में रखना चाहिए, पाकिस्तान पे विश्वास करना नहीं चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की जो आदत है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी which is hate India, which wants to bleed India with 1,000 cuts, which wants to use terrorism as an instrument of state policy. ऐसी हालात में पाकिस्तान is, for us, Pakistan can be where it can go to dogs, it can be doomed, it can die its own death. We are not concerned. If it behaves itself, if it ensures that it does not spread terror, does not speak of Kashmir, yes, we can reconsider looking at them. If provided they do not talk of Kashmir, accept Kashmir as part of India, number one, and secondly, do not spread terror into India by doing all the kinds of nonsense they're doing, because ISI itself is under pressure. Because if the ISI has failed
what they thought that that got strategic depth by going into Afghanistan, that also they've lost. So they are on the back foot. They're totally on the back foot. It is for Pakistan now to mend fences and to ensure that they have good relations, by which only is the action. It is not talking. Their actions must prove that yes, they mean real good and they do not want to harm Indian interests and not side Pakistan, side China and become a stooge of China against India by being, I would say, activated by China to act against India, to see to it that India remains embroiled in the internal hassles and therefore externally remains, rather uncomfortable at all times. So on and off, China will keep troubling us along the LAC and keep pressurizing us along the LAC. And here, the LOC, much that it might sound, Pakistanis might look maybe under American pressure, that look, if you want your Tehrik-e-Taliban Pakistan to be sorted out, you want Iran to be kept at bay, you want Baluchistan to be done what it is, the Americans must be suggesting to the Pakistanis that lay off India along the LOC and at least ensure that Indians don't do something wrong to you. If you do something, Indians will be bound to retaliate. Balakot has shown that you do something, they will strike. Surgical strike has shown you try and do something, we'll strike. So here is a very, very tough handling by the Indians against the Pakistanis. So the Pakistanis are scared. They're under pressure from within their own. So I think Pakistan is definitely economically shattered and militarily backfoot and internally radicalized. Right. So the net is that we just leave Pakistan to stew in its own juices until we get proper assurances from Pakistan about a drastic change in course. I don't think we should have any dialogue or even trade or anything with them, and we'll leave it absolutely, at that. Sir. Because absolutely. आज हमने ये टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि आज five Chinese have been killed near the Dasu project at a place called Desham. So we thought we'll see what's happening in Pakistan. और अभी हम आते हैं अग्निवीर और जो हमारा मेन मुद्दा है अग्निवीर के बारे में. जो अग्निवीर का जो पूरा कहानी हम सबको पता है 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ था. काफी चर्चा हुआ है इसके बारे में. और अभी क्या है, एक बैच अग्निवीर यूनिटों में भी पहुंच गए और दूसरा बैच भी मेरे ख्याल में पहुंचने वाला है या पहुंच गया होगा. तो अभी 1 साल हो गया अग्निवीर का प्लान अंदर करने के बाद, एक्चुअली इख्तियार होने के बाद. It's time to take a relook at this entire Agniveer scheme, where it is going, where it is, and all that. At the outset, मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये अग्निवीर स्कीम क्या है कि ये इंडिया के लिए जरूरी है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है और भारत के फौज के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है. और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत विचार थे. कुछ अच्छे विचार थे, कुछ विचार अगेंस्ट थे, राइट. पर 1 साल के बाद ये टाइम है कि देखना कि क्या है, आगे क्या हो रहा है और इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है. क्योंकि स्कीम है, ऑलरेडी लागू है, इसके बारे में आलोचना करना बेवकूफी है. अभी इसको कैसे सुधारना है वो उसमें ये है. तो आई वॉज थिंकिंग व्हाट विल डू इज दैट आपने भी आपका भी तजुर्बा है अग्निवीर के साथ, और तो इसलिए मैंने सोचा अग्निवीर का ना पूरा कहानी 4 हिस्सों में हम देखेंगे और एक 5वां हिस्सा है नेपाल के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे कि इनका परफॉर्मेंस क्या रहा आज तक. अभी तक आप यूनिट में गए, आप इनसे मिले, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट और ऑन द यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्योंकि उसका समाधान अभी तक मिला नहीं. अब हम बात करेंगे. उसके बाद ये बेनिफिट क्या देना चाहिए रिलीज पर्सनल्स को, उसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं हुआ. और पोस्ट रिलीज रीसेटलमेंट के बारे में भी बात नहीं हुआ. और वो जो गुरकास रिक्रूटमेंट के वो सिलसिला भी ऐसे लटकता हुआ है. So first we will talk of the performance of Agniveer. So you've been to units, you met इनको, तो इसके बारे में आप जरा बात कीजिए और फिर we'll go ahead and talk about the rest of the things. जो अग्निवीर स्कीम है,
इसके 2 बैचेस पहुंच गए हैं पलटनों के अंदर, तीसरा यूनिट बैच अभी जाने वाला है। और इनकी जो ट्रेनिंग है सेंटर्स में, वाकई काबिले तारीफ ट्रेनिंग जो देखने को मिली। तकरीबन 10 हफ्ते का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, 14 हफ्ते का तकरीबन एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग है, 7 हफ्ते का इनका ऑन द जॉब ओजेटी जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो इतना तकरीबन, और ये जो 4 साल है दैट इंक्लूड्स द ट्रेनिंग पीरियड ऑल्सो। तो ट्रेनिंग पीरियड शामिल है जिसमें इनको अभी तकरीबन, मैं कहूंगा कहीं पे 24 हफ्ते है, कहीं पे 31 हफ्ते है, बट इन्फेंट्री में तकरीबन 31 वीक्स के बाद ये पलटनों के अंदर जा रहे हैं। तो ये तो हुआ उनकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर जो देखा गया, चाहे उसका पीपीटी है, चाहे डे फायरिंग है, चाहे नाइट फायरिंग है, और या ड्रिल्स है, जो ये जो 4 इसमें देखा गया कि क्या पुराने रिक्रूट्स और नए वाले अग्निवीर में क्या अंतर है और कहाँ पे क्या नुकसान हुआ, कहाँ पे फायदा हुआ। तो देखने में आया कि चारों इसमें, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे वो ड्रिल है, चाहे आपका डे फायरिंग है, चाहे नाइट फायरिंग है। डे फायरिंग में मैं आई एम ओनली टेकिंग फर्स्ट क्लास, आई एम नॉट टेकिंग मार्क्समैन इनटू या कंसिडरेशन और पोर इनटू कंसिडरेशन, बट जनरली एफएफ जैसे फर्स्ट क्लास एंड हाउ द फायरिंग। तो दे हैव प्रूव्ड एज गुड as the normal recruits are, who underwent a little longer training than this. But 10 weeks plus 14 weeks plus 7 weeks is something which, मैं जब उनको मिला इस ट्रेनिंग के बाद पलटनों में जाकर के, और पलटनों में देखा मैंने और फील्ड एरिया में भी देखा, तो मुझे लगा कि उनका जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, काबिलियत है, जो उनको लग रहा था। पहले तो जवान बहुत छोटे हैं उम्र में, 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के उम्र के हैं, तो 17.5 में आए हैं, और तकरीबन जब तक पलटन में पहुंचे, आप लगा सकते हैं 6-7 महीने के बाद पहुंचे हैं, 8 महीने के बाद पहुंचे हैं, तो तकरीबन 18.5 साल के आसपास का एवरेज एज अगर आप लगा लें तो 19 साल का लड़का है जो पलटनों में पहुंच रहा है, द फर्स्ट बैच विच इज देयर। तो उसका जो जज्बा, उसको कोई आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वर्दी वही है, खाना पीना वही है, अलाउंसेस उनको हाई ऑल्टीट्यूड में वही मिलते हैं जो जवानों को मिलते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पैकेज जो है उनका 4.72 लाख एंड ग्रेजुएटेड विच गोज अप टू 6.73 लाख तक जाता है चौथे साल के अंदर, वो छोड़ने के बाद। तो उसको छोड़ करके, और उनका जो दैट विच दे विल गेट पैकेज, वो पैकेज के समय तो 4 साल के बाद आएगा, अभी नहीं। तो लेकिन मुझे लगता है उनका जो ट्रेनिंग है, और अभी जो नंबर ऑफ रिक्रूट्स जो आए हैं, नंबर ऑफ अग्निवीर जो पलटनों में आए हैं, किसी पलटन में 40 आए हैं, किसी में तकरीबन 70 के आसपास आए, तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वैकेंसीज जो है ऐसे। तो उनका जो मैं कहूंगा intermixing with the other boys and all, absolutely fine, no problem. Though of course recruitment is all India, all caste recruitment है, उसमें भी ध्यान दिया गया है कि कुमाऊं रेजिमेंट में कुमाऊनी और अहीर आए हैं, गढ़वाल में गढ़वाली गए हैं, गुरखाज है, सीख में सीख है। सो जो अपना नॉर्मल कॉम्पोजिशन होता है उसको अभी तक मेंटेन कर सके हम लोग। जहाँ मिक्स्ड कॉम्पोजिशन है वहां मिक्स्ड लड़के गए, सो दैट हैज बीन इंश्योर्ड। उसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं देखी गई, मुझे दिखी नहीं। जब मराठा के वहां गया मैं, तो वो मराठा ट्रुप्स थे जिसपे ऑल दी 4 सदर्न स्टेट्स के ट्रुप्स कंप्राइज करते, तो दैट वाज गुड। तो मुझे नहीं लगता, जहां तक कि ट्रेनिंग का सवाल है, या उनके डिसिप्लिन का सवाल है, या उनके जोश में, सब में आई थिंक आई कैन टिक देम वेरी वेल। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इज, या we'll recapitulate one by one, we'll go. So what you have said is very good and heartening कि मेरे को भी यही खबर मिला है जो आर्टिलरी में गए हैं, कि जो अग्निवीर जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है और जो ट्रेनिंग हो रहा है, दिया जा रहा है, और जो यूनिट में जाके ये जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। और ये भी पाया गया है जो अग्निवीर और जो पुराने जमाने के रिक्रूट में कोई फर्क नहीं है, ठीक। और तकरीबन इंडियन आर्मी के अंदर ये काबिलियत है, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए सबको कि ये जो जितने भी लोग आते हैं इंडियन आर्मी के सिस्टम के अंदर, राइट, सिस्टमैटिकली इंडियन आर्मी हैज द कैपेबिलिटी टू सॉर्ट आउट ऑल दीज पीपल एंड गेट देम टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी हमें खबर मिला है कि ये इनका मेल मिलाप यूनिटों के अंदर अच्छा है,
कोई कास्ट प्रॉब्लम नहीं है, मोरल का प्रॉब्लम नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। तो जैसे आपने बताया, तो प्रॉब्लम तो यहाँ से इसके बाद का शुरू होता है, अभी तक कुछ नहीं है। क्योंकि सो लेट्स लुक एट द लॉन्ग टर्म इशू, और द लॉन्ग टर्म इशू, इसके बारे में मैंने एक मैथमेटिकल मॉडल भी किया है, और आई हैव इसको छापा है, और मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ विदाउट गोइंग इनटू फिगर्स एंड ऑल दैट। तकरीबन पहले 4-5 साल में कोई दिक्कत ही नहीं होता किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। प्रॉब्लम शुरू होगा चौथे साल के बाद, यानी कि अभी आए हैं यूनिटों के अंदर, कुछ लोग 6 महीने खत्म हो गया, तो उनका 6 महीना ट्रेनिंग और 6 महीना यूनिट के अंदर, 1 साल हो गया। 3 साल के बाद, आज के 2.5-3 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू होगा, जब ये लोग चले जाना शुरू करेंगे, राइट। क्योंकि अभी तक जो रूल्स है उसमें सिर्फ 25% रिटेंशन है, 75% बाहर जा रहे हैं। अगर यूनिट के अंदर 10 लोग आ रहे हैं, तो उसमें 7 या 8 लोग बाहर जाएंगे, 2 ही रहेंगे, या 2-3 रहेंगे, 7 लोग बाहर चले जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे चलता जाएगा आगे, तो यूनिट के अंदर, क्योंकि ये सब लोग जो छोटे उम्र के हैं और छोटे सर्विस के हैं, वो हमें पता है कि ये यूनिट में ही रखे जाते हैं। आप बाहर भी नहीं भेज सकते हो उनको, ईआरई में नहीं भेज सकते हो, या किसी हेडक्वार्टर वगैरह में नहीं भेज सकते हो, आप यूनिट में ही रखते हो। तो यूनिट में रखने के कारण ये इसका असर क्या होता है कि जो राइफल कंपनी है, या गन बैटरीज हैं, या सेबर स्क्वाड्रन्स हैं, राइट, इनमें आ जाते हैं। और इन ये फाइटिंग यूनिट्स हैं, दीज आर द टीथ ऑफ आर्म। एंड एट दिस स्टेज, over a period of time, we lose on experience. So I heard that there was a move to increase the rate of retention, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो अच्छा होगा। सर, आप जो कह रहे हैं इसमें काफी कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि हो सकता है, बिकॉज पहले तो ऑफ कोर्स 25% का ही है रिटेंशन, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने कहा है कि बाकी जो 75% है, चाहे वो रेलवेज में जाए, चाहे बैंक्स में जाए, चाहे पुलिस में जाए, या वो अलग बात। लेकिन अभी के जो सुनने में आ रहा है, ये हो सकता है कि सरकार 50% जो है रिटेंशन करे, रादर देन 25%, सो टू गो अप टू इंश्योर, जैसे आपने कहा, एक्सपीरियंस, और एट द सेम टाइम टू कॉम्बैट this thing, teeth is also not denuded, and at the same time the experience that these boys have is not lost. But in all said and done, 4 years में जिसमें शामिल ट्रेनिंग और जिसमें शामिल उसका बाकी जो रहना है, उसकी छुट्टी शामिल है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है नॉर्मल जवान भी, नॉर्मल, जब आप अगर अग्निवीर नेता जब सिपाही था और सिपाही आता था, फर्स्ट 4 years तो उसको खुद ही नहीं मालूम होता था विच साइड इज नॉर्थ, क्योंकि वो पलटन में आना है, उसके बाद तो अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, फिर उस ट्रेनिंग के बाद वो अपनी अपनी कंपनियों में जाएगा, उधर सीखेगा। इस फर्स्ट उम्मीदवार कार्डर वुड ओनली कम आफ्टर अबाउट 5 to 6 years of service, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहते थे। लेकिन बहुत कम नंबर में आते थे, इतने कम रिक्रूट्स आते थे कभी कभी पलटनों के अंदर, 10 या 15 एक साल के अंदर। अब तकरीबन 20 से 25 आएंगे हर 6 महीने के अंदर। तो ये जो एक है, इसमें फायदा एक मैं देखता हूं शंकर सर, कि क्या हो रहा था पहले, बॉर्डर गार्ड ड्यूटी देने के लिए भी जवान नहीं था आपके पास, बिकॉज सब कोई बिकॉज ऑफ द न्यू प्रमोशन पॉलिसी 6 साल में वो लांस नायक बन रहा है, 6 साल में लांस नायक ही बन जाता है वो, तो उसके बाद फिर हवलदार बन रहा है। तो इट वाज सच ए रैपिड रेट दैट एमएसएपी मिल रहा है, सो इट वाज वेरी वेरी रैपिड। एज ए रिजल्ट जो नॉर्मल ड्यूटीज हैं, जो जहाँ पे आपको उसके लिए लोग नहीं मिलते थे, हाँ, उसके लिए बहुत परेशानी हो रही थी, आपको यंग जवान नहीं मिल रहे थे। अब ये अग्निवीर आने के कारण दैट्स प्रॉब्लम हैज गॉट सॉर्टेड आउट। और 4 साल है, अब 4 साल में भी आप देखिए 4 में से 1 रिटेन हो रहा है, जिसको आप फिर से वो जाता है
फिर अपनी सर्विस शुरू करता है। वो जो 4 साल अग्निवीर तो खत्म हो गए, उसके बाद वो 15 साल की सर्विस करेगा, जो भी करेगा अपना पेंशन पाने के लिए। और अब उसको आप दूसरी तरह की ट्रेनिंग दोगे, अब उसको आप तैयार करोगे, आर्मी के कोर्सेज में भेजोगे, उम्मीदवार कार्य कराओगे, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दोगे, आर्टिलरी में, आर्मर्ड में, ईएमई में, इसमें इंजीनियर में, अपने इन्फेंट्री में, और धीरे धीरे करके फिर वो लड़का जो है वो अब सिपाही बन गया है, वो सिपाही की तरह। तो ये जो दैट्स लड़के ओके। आए हैं इनिशियली, that's a that's a big boon. That's a big boon which we must use it for our good, या and that is how the system will be run. या Yeah, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक जैसे आपने बोला पहले 4 साल में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह हमारा जो फौज का सिस्टम है वो सॉर्ट आउट कर लेगा, उसमें मेरे को कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया आपको, ये जो 25% रिटेंशन है वो बहुत खटून है। राइट। आप जैसे बोल रहे हो, अगर 50% रिटेंशन भी हो गया, अगर वो ग्रेडेड रिटेंशन हो गया कि भाई 25% 4 साल के बाद 50%, इट कैन बी एट 4, 7, 9 years ग्रेडेड रिटेंशन, or graded exit rather than graded retention. I would say graded exit, right? 25% at 4 years, another 25% when he's got 6 or 7 years, another 25% at 9 years. And I think that will be a good thing. या ये बात मैंने भी सुना है कि ये जो रिटेंशन का रेट इंक्रीज होने वाला है, उससे क्या है कि दिस स्कीम विल कम इनटू बैलेंस। राइट। आई एग्री विद यू कंप्लीटली ऑन दैट। एंड इफ दैट हैपेंस इट्स वेरी गुड, क्योंकि पूरा आर्मी का एज प्रोफाइल भी उससे क्या है कि कम होगा। और जो मुद्दा पहले से शुरू हमने किया था कि भाई आर्मी का एज प्रोफाइल को कम करना है, वो तभी होगा जब आप ज्यादा अग्निवीर टाइप या यंग पीपल, यंग ब्लड आप अंदर करते हो। राइट। और पर वी शुड हैव अ बैलेंस। इफ दैट बैलेंस इज रीच, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। द थर्ड पॉइंट विच आई थॉट विल टेक, कि भाई आप एज ऑफ टुडे 75%, कल के दिन अगर हो जाएगा तो 50% आप इनको बाहर निकाल रहे हो। राइट। सो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। राइट। इनका रीसेटलमेंट का प्रॉब्लम्स है, इनका ये जाएंगे कहाँ, इसके ये भी प्रॉब्लम है। और करेंगे क्या, ये भी एक इश्यू है, एक मुद्दा। इट्स ओपन एंड। हालांकि ये प्रॉब्लम अभी 2-3 साल आगे है, बट आई थिंक वी नीड टू थिंक ऑन इट एंड आई वांट योर व्यूज ऑन दैट। So the acid test of the Agnipath scheme is the resettlement. बिकॉज जो करेक्ट। फौज में है उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे विल बी फैंटास्टिक, दे आर रियली द बेस्ट दैट इज, बट ऑल अदर्स वर इक्वली गुड, and the resettlement of those 75% will be the acid test, and it will be absolutely essential that such a disciplined man force who has now, you can actually make out from the crowd, in the crowd, that yes, ये अग्निवीर दिखता है, उसका चाल, उसका बोलना, उसका खड़ा रहना, उसका हुक्मों को पालन करना, सब में उसका मोराल, उसका डिसिप्लिन, सब में इतना आले दर्जे का ऊंचाई प्राप्त की होगी उसने, नंबर एक। नंबर दो, ड्यूरिंग दी 4 years जो स्किल उसने प्राप्त की है, चाहे वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया है, 10th आया तो 12th होकर के गया है, 12th आया तो ग्रेजुएशन के लिए 1 साल रह करके गया है, प्लस एग्जिट के वक्त 11 लाख सम अमाउंट 11.71 लाख जो उसने लिए हैं, उसकी खुद की जो है, जिसका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, हिज ओन 30% कंट्रीब्यूशन, इक्वलेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, सो सम काइंड ऑफ अ स्टार्टअप अगर उसको शुरू करना है, इट इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प। इट मैटर्स नॉट फॉर द फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट 10 साल के लिए लगातार, मैं कहूंगा, जब हम इस एग्जिट, और दिस इज एसिड टेस्ट नॉट फॉर 1 year, 10 साल लगातार जितने भी अग्निवीर बाहर जाते हैं, और एवरीबॉडी, मतलब the all of Indians who are capable, girls and boys, must look forward to this scheme to join, not because of anything, but because of the opening that scheme gives, not within the armed forces, but even outside. But outside. If that can be attained, I think it's a real win-win situation without fail, which we are capable of, and we should do it also. Yeah, I think आपने जो बोला है बहुत अच्छी बात बताया। The acid test of अग्निवीर स्कीम तब होगा जो लोग आर्मी के अंदर हैं वो अच्छे बने, और आर्मी के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर बढ़ते रहे। और जो 75% या 50%, मैं 50% ही मान के चलूंगा, क्योंकि
मेरे को भी यकीन है कि 50% हो जाएगा कुछ दिन के बाद। ये जो 50% बाहर जा रहे हैं, इनका क्या कर सकते हो, इनके साथ क्या कर सकते हो? अगर वो सफल है कि उनके साथ अब क्या रवैया करोगे, उनके साथ सफलता ठीक होगा तो बहुत लोग आएंगे इस स्कीम में। अगर वो असफल रहा तो बहुत लोग आएंगे नहीं इस स्कीम के अंदर। ये बात आपने अच्छा बताया। तो अभी देखते हैं कि इनके लिए हम कर क्या सकते हैं। पहले तो यू नो दिस इज वन थिंग विच द गवर्नमेंट हैज नॉट डन। मेरे ख्याल में ये किसी और मुद्दे पे भी उठाएंगे, और मेरे ख्याल में ये टाइम है, हमारे नेताओं से भी पूछने का टाइम है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है कि भाई अग्निवीर के आपका क्या रवैया, आपका क्या पॉलिसी है। नेताओं से भी पूछने का टाइम है। और रीसेटलमेंट देखिए, फिफ्थ पे कमीशन की बात है, फिर सिक्स्थ भी नहीं, सेवंथ भी नहीं, ये फिफ्थ पे कमीशन में एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑन रीसेटलमेंट। उन्होंने उस वक्त बताया कि जितने भी लोग आर्मी से रिटायर हो रहे हैं या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो रहे हैं या नॉर्मल सर्विस खत्म कर रहे हैं, उनका प्लीज साइड स्टेप देम इनटू पैरामिलिट्री फोर्सेस। और उन्होंने पे कमीशन ने उस वक्त रेकमेंड किया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस शुड नॉट हैव देयर ओन इनटेक, इट शुड बी कंप्लीटली फ्रॉम द आर्मी, राइट? अभी क्या ये वापस लागू कर सकते हैं वो, यू नो, एंड ओवर एंड अबव the existing quotas for Agniveers? And second point is that entire rules of government of India as of now is for ex-servicemen. The quota in the paramilitary forces is for ex-servicemen. अग्निवीर जो है वो एक्स सर्विसमैन नहीं है, क्या उसको वो कोटा मिलेगा? ये बड़ा प्रश्न है ये। अगर अग्निवीर एक्स सर्विसमैन नहीं है, राइट, और वो इनटेक इज ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन इनटू द पीएमएफ, तो अग्निवीर के पास तो रास्ता ही नहीं वहां जाने के लिए। तो रास्ता बनाने की जरूरत है। इसके बारे में थोड़ा आप बात कीजिए, उसके बाद देखेंगे सिविल में और क्या कर सकता है ये। सर, मेरा ये मानना है कि जैसे डायरेक्टरेट फॉर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, देयर शुड बी एन Agniveer resettlement scheme established at least 1.5 years before the first exit. The first exit जो अग्निवीर बाहर निकलता है, it must be like an employment letter कि आप आईटीबीपी में जाइएगा, आप सीआरपीएफ में जाइएगा, आप बीएसएफ में जाएगा, आप बैंक में जाएगा। और कई इनमें से हैं जो कहेंगे नहीं साहब हम अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, ये गवर्नमेंट के लोन्स हैं, आप ये लीजिए, आप स्टार्टअप में जाए। दी जनरल फीलिंग इन द पब्लिक शुड बी कि यार ये जो अग्निवीर हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, ये तो बिल्कुल ही जैसे दामाद हैं सरकार के। The aim is to be able to show that they are not just being given as lollipop, they deserve because of the training, because of the discipline, because of the ability to give back to the society much more at that young age. अगर वो एक environment हम पैदा करें, and that should not be done after they have left. It should 1.5 years before. Now is the time to establish an Agniveer resettlement scheme, ensuring that every Agniveer, if he is physically fit, if he is mentally robust, and he desires for a government job or a job, he will be given based on his merit and based on his district. Nobody should be left. Not even one man should be left. Because once the word goes into society that these Agniveers is what the government of India is looking for, real citizens of this country, real discipline, real nationalists, real patriotic, deserving to be taking India as the third largest economy, as one of the powers that matter in the world. And the way out, and not only this, we will have people in the cyber world, we'll have an artificial intelligence world, in the other world, in which a lot of these people are involved. And the real feeling is every second person they meet who's doing well, it is an Agniveer. I am telling you, this is the scheme that the government has opened, which will be in maximum demand, not for any other thing, for their own resettlement, number one, for their own family's good, and number three, for his own good.
and for the good of the nation, because nation wants just not soldiers, but it requires warriors of all kinds, in all fields, for internal security, for cyber warfare, for space, for artificial intelligence, for drones. So much of the user requirement is there, user needs are there. These defense corridors are coming up. The need for having Atmanirbharta is there. Everywhere, these Agniveers are going to prove an asset, provided we do not waste this asset and do not even look at it. Oh, we should have done this. Abhi, it should be now, like you rightly said. Two batches have already joined. The third batch is joining. That means the maximum in 4 years, there will be maximum 8 batches. So by the 6th or the 5th batch, the Agniveer Resettlement Directorate in the under the CDS should be established. Therefore, once it is established, and then ensuring with the MOD in full play, finance, home, all of them as part of it, to ensure that there will be no backlash, no bad reputation coming. अरे साहब ये तो बिल्कुल ही ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है. Because if you found the kind of backlash that came, maybe from the opposition states or states which are a little different from this thing, irrespective of whatever it is, the reason for it is only two. One is the desire to get some pension, which they were not getting it, so they were feeling bad. Ye pension nahi hai. Second, they were losing a job. They felt they were not coming. The organization benefits by Agniveer. There is no denying the fact. Organization benefits by Agniveer, but the resettlement of Agniveer, the nation is benefited. So there are two things. Yeah. So you find that the organization is also benefited and the nation is also benefited. That is where lies the real test of this Agnipath scheme, sir. तो ये आगे है, तो देखने वाली बात है. और मैं ये मुद्दा अभी इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये इलेक्शन का सीजन है. वोट मांगने नेता आपके पास आएंगे, तो आप पूछिए आप अग्निवीर के लिए क्या कर रहे हो. ये बात ये है कि आप अगर पूरा दारोमदार फौज के ऊपर ही छोड़ देगा तो फौज क्या कर सकता है. इट हैज टू बी अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, ताकि हर एक अग्निवीर जो जैसे कुलकर्णी साहब ने बताया, जिनका ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हुआ, वो एक डिसिप्लिन सोल्जर है, ये कहीं भटक ना जाए, पर ही शुड बी यूज्ड प्रोडक्टिवली फॉर अ राइजिंग इंडिया. चाहे वो स्टार्टअप क्यों ना करे, चाहे वो बैंक में काम क्यों ना करे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में क्यों काम ना करे, या प्राइवेट क्षेत्र में भी जाके काम क्यों ना करे, वो अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए. एक अनिवार्य चीज है जो और अहम चीज है. ओके, नेक्स्ट मुद्दा हम बात करेंगे. तो ये अग्निवीर स्कीम और नेपाली रिक्रूटमेंट और गोरखास और अंतरराष्ट्रीय रिपरकशंस है इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि वो तो बंद हुए हैं अभी प्रॉब्लम. या सर ऐसे है कि ये जो नेपालीज का है, जो भारत की फौज में आते थे और अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने जो गुरखाज हैं उनके ऊपर बहुत गर्व है. एक वो वाकई जैसे फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी कहते थे कि भाई अगर कोई आदमी है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है, तो जो डरता नहीं है. तो बिल्कुल, तो अगर ऐसे आदमी हैं इसमें कोई शक नहीं. आज भारत में भी अपने पास बहुत गुरखाज हैं जो भारत की फौज में आना चाहते हैं. अब ये है कि नेपालीज जो गुरखाज आते थे वो आने बंद हो गए क्योंकि वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते, 4 साल के लिए नहीं बनना चाहते. दे वांटेड अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट. उनको नौकरी का सवाल है, पेंशन लेना चाहते हैं वो. तो वो जो है, हम डेफिनेटली भारत के अंदर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि बाहर से जो आएंगे उनको तो हम रेगुलर लेंगे और जो भारत के नागरिक होंगे उनको हम अग्निवीर रखेंगे, और जो पड़ोसी देश है उनसे वो होना थोड़ा मुश्किल है. जबकि आज की वो हो नहीं सकता. सो आज की तारीख में हमारे पास भारतीय गुरखाज भी बहुत है जो फौज के अंदर आना चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है. जहां तक जो गुरखाज जो नेपाल के हैं, जो यूके में भी हैं,
जो जाते हैं, और अभी पता चला वो मर्सनरीज बन के रूस की फौज में गए, जहां पे उनके साथ बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है भारत को कि आप हमें अगर वहां से वापस ला सकते हैं, बनस्पत हमारे को तो कुछ और बोला गया और हमारे हमारे से कुछ और करवाया जा रहा है। तो उस तरीके से देखते हुए मुझे लगता है धीरे धीरे करके उन्हें भी, मैं कहूंगा कि हमने उस तरह का एक माहौल पैदा करना चाहिए कि चाहे वो नेपाल के गुरखस हो, चाहे हमारे अग्निवीर हो, सबके सब जब भी भारत की फौज को छोड़ करके जाएंगे, चाहे वो 75% में हो, चाहे वो 50% में हो, वो ऐसे नागरिक बनेंगे, चाहे नेपाल के लिए हो, चाहे भारत के लिए हो। वो मतलब एक अलग, यू विल सी द कट, मतलब they will be different in the society only for the dedication, for the commitment, for the sincerity, for the discipline, for the honesty, everything. और वो ही है, और उनकी मदद हमने भी, भारत की सरकार ने भी नेपाल की सरकार के साथ मिल करके यकीन करना चाहिए, ये लड़के जो अग्निवीर आएंगे उनके रीसेटलमेंट में हम मदद करेंगे। सो आप क्या बोल रहे हो, और एक सही सुझाव दे रहे हो कि नेपाल गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहिए कि भाई एक तो हम 25% नहीं 50% रखेंगे, 50% बाहर करेंगे, जिस तरीके से होने वाला है हम सबको पता है। और ये जो 50% बाहर जा रहे हैं, इनके लिए भी रीसेटलमेंट स्कीम्स बनाएंगे। और क्योंकि उन नेपाल से जो गोरखास आते हैं हमारे यूनिट में, वो ज्यादा नफरी नहीं होता, उनके लिए हम स्पेशल रीसेटलमेंट स्कीम भी कर सकते हैं। और खास करके इंडो नेपाल ट्रेड एवेन्यूज फेयर्स वगैरह होता रहता है, इनके जरिए उनका रीसेटलमेंट करके उनके अपना नेपाल के अंदर जिस तरीके से हम अपना अग्निवीर को हम अपना समाज में इस्तेमाल करते हैं या करने का हमारा इच्छा है, हमारा प्लान है, वही प्लान हम नेपाल को भी दे सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका समाज में भी थोड़ा सुधार हो और आपके लिए भी ये लोग जो हैं जाके अच्छे बने और आपका देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत गोरखा सीनियर ऑफिसर से बात किया हूँ, क्योंकि हमारा एक ये वी हैव और स्ट्रेंथ इन नेपाल बॉन्ड सर, यस बॉन्ड, हाँ, और ये हमारे लिए हमारे वफादार हैं, वफादारी की भी नाता है, राइट। और जो भी नेपाल में हो रहा है उसके अगेंस्ट या उसके हमारे साथ रहने का इनका ये जो रवैया है, दैट्स समथिंग व्हिच वी कैन नॉट लूज। ये हमारा संपत्ति है वहाँ, राइट। And so we cannot lose. So I think the government has to take some special steps, some special thing, so that recruitment from Nepal into the army restarts, right? And that आपने भी अच्छी तरीके से समझाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। So anything else you want to talk about Agniveer, or otherwise I'll take a few questions. So I think the only thing is that इसके बारे में जो मे बी इन द वेटरन कम्युनिटी और मोर फ्रॉम दिस थिंग, एक तरीके से माहौल पैदा किया गया है, and even amongst the politicians also, some of them who do not understand what the Agniveer scheme is, where is the organization benefiting, so तरह तरह के बयानबाजी हो जाती है। मुझे बयानबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और फौज के ऊपर छोड़ देना चाहिए जो विद इन है, और जो फौज के बाहर जाते हैं, जैसे मैंने कहा, इसे acid test of the Agnipath scheme is the resettlement of the Agniveers who step out. वो अगर सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया तो मुझे लगता है इट्स अ विन-विन सिचुएशन, एंड वी शुड नॉट कंडेम, वी शुड वेट एंड वॉच कि देखिएगा आप 4 साल के बाद जब जिस तरीके से अग्निवीर जो है जो जवान बनेगा, और जो अग्निवीर जो बाहर जाएगा और भारत का एक बहुत ही अच्छा नागरिक बनेगा, not only a good citizen but a wealthy citizen, a citizen who will do economically well, and that is what this thing. We cannot live just by words. We have to have good living also. We have to eat well. We have to live well. We have to ensure that our families are taken care of. All that will be taken care of. Don't worry. And we will not do you a favor. We are expecting you to doing us a favor because you're good. You have been trained well. You're disciplined, and we want you. That creation and that environment will change the entire this thing. And ये जो बयानबाजी है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। That's I agree with you.
बट ये देखने वाली बात है हाउ मच कैन द गवर्नमेंट डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिसेस, राइट? फर्स्ट हाफ डिलीवर कर देगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्योंकि बात ये भी है कि फिफ्थ पे कमीशन का रिकमेंडेशंस अभी तक लागू नहीं किए गए। तो देखिए, आप और हम फौजी हैं, अ, हम विश्वास रखते हैं सबके ऊपर, हम हमें जो टास्क दिया गया हम कर लेते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता इन चीजों में, राइट? जहाँ वोट नहीं मिलते वो काम भी नहीं करते, ये भी साफ बात है। पॉलिटिक्स में यही तो रीत है। तो देखने वाली बात है कि कैन द चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट, जैसे जनरल कुलकर्णी ने बताया, एसिड टेस्ट ऑफ दिस अग्निपथ स्कीम इज इन द रीसेटलमेंट। जो नया गवर्नमेंट आएगा, क्या ये इसमें सफल होगा कि नहीं, देखेंगे। ये मुद्दा हम दोबारा उठाएंगे 5-6 महीने के बाद, जब नया गवर्नमेंट आएगा, और उनको याद कराने के लिए कि भाई आपका वादा है, आप क्या कर रहे हो, और ये देश का संपत्ति है, उसको किस तरीके से लुटा रहे हो या उसको फायदा में लेके आ रहे हो। हम पूछेंगे ये सवाल, क्योंकि बिना पूछे कोई गवर्नमेंट करेगा नहीं। ये तो पुराना रीत है कि जब तक बच्चा दूध के लिए ना रोए, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। वही कहानी है ये। तो we'll see how it is. Shall we take a few questions if you don't mind? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. We'll take questions both. We'll take a few questions on Pakistan, जिसके बारे में हमने बात किया. We'll take a few questions on Agniveers scheme also. So the first scheme, which is Akash, is quite optimistic on decimation of Pakistan. He says probable time to decimation of Pakistan into various conflicting fragments and the future awaiting this conflagrated area. Your views? Yeah. मेरा ये मानना है, and I am always a firm believer, Pakistan is our neighbor, and let it do what it wants to do as long as it does not harm us. If it harms us, the retaliation will be very, very strong. If it wants to break into 5, 6, 4 provinces or wants to remain united, it is their doing. But we should not be seen as either precipitated its division, or we should not be a part of the disintegration of Pakistan, or be even a cause for Pakistan's economic downfall. It is their doing. It is they who have done what they have done to themselves. They have used terrorism as an instrument of state policies. It is they who are on the grey list of the FATA and trying to get out of it always and every time. It is they who have been seen to be spreading terrorism the world over, everywhere, whether it's in Europe or it's in America or anywhere. The first thing that strikes is a Pakistani involvement over there. So it is their doing, and we should not be seen as part of it. We should stay away. We just seal our borders and keep Pakistan to itself. If it interferes into ours, retaliate hard. Otherwise, let them do what they want to do. They are not a threat to us. They can never be a threat to us. Yeah, I think that's a fair one and a very good one. So Pakistan wants to resume trade. Will this possibility not extend a lifeline internally under current trying circumstances? Therefore, should we extend an olive branch which may boomerang in the long run? Yeah, we spoke about it. Just say a few words. Yeah, no, definitely. No trade with Pakistan because terror and trade don't go together. The terror must cease and freeze. There should be no terror threats, not even an attempt to use or even train terrorists, have terror bases in Pak-occupied Kashmir, send them into India under various garbs, if not from there, through Nepal or anywhere for that matter, use drones for dropping drugs, weapons, or currency. I think all that Pakistan should behave like a normal state, that it is our neighbor, it will remain as our neighbor. So it should behave like a good neighbor. After that, we can see what trade or whatever we want to do. We had given them completely this thing exemption, and there was free trade. There was no problem. There was nothing for the Pakistani. Pakistan didn't offer us anything for that matter. Trade is not very much between India and Pakistan. It is Pakistan which will stand to benefit having traded with India. Should Pakistan behave itself? Its behavior is what it is. I don't think any olive branch. Yeah. Yes, sir. So this is more of a comment. We should look at Pakistan only when we see our self-interest in it. After exhausting all options without Pakistan, I completely agree with you. I think it's a sensible statement, which I thought I must put it out. Okay. Okay, this is very funny. He says, an Indian attack on Gwadar has been reported.
This is from Pakistan. Another attempt to sabotage ongoing Chinese projects in Gwadar. So he feels, he's from Pakistan. He feels that, yeah, that we are trying to sabotage Gwadar and everything. Look, let me tell you, before General Sanjay Kulkarni responds, let me tell you, India does not need to do anything to Pakistan. Pakistan is in a self-destruct mode. Like he said, they can do what they want. Whatever sabotage you're doing in Gwadar is self-inflicted. Okay, now over to Sanjay. Yeah, Sanjay. Uh, Shankar sir, I totally agree with you. Pakistan is in a self-destructive mode. It does not need India. It is adequate. Should we be wanting to do it, we'll do it openly. We will not do such clandestine things against Pakistan. We have seen and treated Pakistan as a neighbor. We've seen and treated Pakistan as a sibling. But Pakistan has not lived up to its reputation nor expectation. Pakistan has behaved in a most terrible manner, and the result of it is what they're suffering from. As you sow, so shall you reap. If you have, sort of have only cobras in your backyard, they're bound to come and sting you also. They're expecting only to go and sting India is not done. And now, what you said initially is Pakistanis by nature hate the Chinese. It is a fact. A common, normal Pakistani, he does not like the Chinese, not for any other reason. He feels they are exploiting. And there is no denying the fact. Chinese do exploit their expansionism, their exploitation, whether it be in Afghanistan, whether it is Balochistan minerals, whether it is Balochistan water, whether it is wanting a base to ensure that their own road to the Karakoram highway, the CPC along the Khunjara Pass goes into Xinjiang province. So average Pakistani knows that the presence of the Chinese will only benefit the Chinese, or it will benefit a few Punjabis who are involved in their project in terms of the money is concerned. And normal Pakistani, Aam Admi in Pakistan, is not a beneficiary of the Chinese presence over there, because nothing so far, $60 billion project in which about $20 billion has already been invested. Pakistanis have not seen anything that benefits them, whether it is in fisheries, whether it is in infrastructure, whether it is in power, or anything for that matter. Their in fact, economy has gone down. If it is Pakistan is looking to be selling itself to China, then it's a different issue altogether. Even then, China will regret even if it buys Pakistan, because they will not know which side the Chinese economy has further gone down the drain, because if they do that with Pakistan. So it is a situation in which the Chinese also think twice, or I don't know whether the Xi Jinping might be thinking, yeah, has he done a wise by involving Pakistan, or did he really think that Pakistan, because of that hatred towards India, will side China? It is not possible. Even when the Pakistanis with America, the Pakistanis did not like much of America. The government was with America, but the common man did not like the Americans. Similarly, here the Pakistani government is with China. The common Pakistani does not like China. So there is a bit of a yeah, there's definitely some problems. Yeah, छोड़ दो उनको छोड़ दो उनको छोड़ दो उनको अपने हालत में छोड़ दो बिल्कुल okay बिल्कुल so how will the halt on recruitment, now we'll talk of Agniveer Agniveer. scheme. How will the halt on recruitment from Nepal affect the Gorkha brigade overall? Will it perhaps result in rationalization, or will it have an adverse effect because Nepalese form a good chunk? See, Nepalese don't form a very big chunk as what generally feels. We have enough. We have millions of Gurkhas in India, and they are as good and competent and professionally very good, as brave and as honest and as good as any of the Nepalese Gurkhas are concerned. It's just a question of time, and they have slowly and steadily, not only because of this, and there are other this thing also. I think the Kumaunis, the Gadwalis, the Arunachalis, the Gurkhas, all of them almost the same hill tribe. They do well, and I think there should not be a problem. Having said that, I would still say the Nepalese government must allow
the Nepalese to join as Agniveers in the Indian Army. The Indian Army will ensure, once with the 50%, as we all visualize and hope for, that 50% retention will be there. That 50% retention will go a long way in absorbing 50%, and the balance 50% will be taken care of by skilling them much more than what they would otherwise be skilled by anybody else in India. So that they will also be well off, and the ones in the armed forces will also be well off. So both these people are going to be equally well off. Sometimes probably the people in the armed forces might want to emulate or want to move out, thinking that the ones who are outside are better off than the ones who are inside. I'm sure the government will leave no stone unturned to ensure that the ones moving out as not retained will be taken care of by the government by giving them all kinds of facilities and absorption and recruitment and employment. I think it will go a long way. My request to the Nepalese government would be not to disassociate with itself with the Agniveer scheme, but join the Agniveer scheme, allow the people to come and see for themselves how the thing. Otherwise, within the armed forces, I don't think we can have two, one for the Nepalese and one for the Indian and the Yeah, Indian army. It can't happen. It has to be the same. There can be no discrimination between a Nepalese or an Indian. They are yeah. one amongst Thanks us. a lot for that. Yeah, I think that's the important thing. We can't discriminate between Indian Gorkhas and Nepali Gorkhas. And the Nepalese army has to come forward, Nepal has to come forward, government, so that we come to a via media as to how we can handle the whole affair. And our government also has to change this Agniveer scheme, because at this point of time it has thrown up this knotty problem which has got long term implications, right? The execution of the scheme, the concept of the scheme is good, I still maintain it, but the execution and the planning has been bad, and we have to resolve it. Okay, now this is a question for you, Kulkarni. What will be the impact on our villages from where 70 to 80% soldiers come? Will a 4 year service affect the culture of villages for whom pride, not money, was the main lure in the army? This is a fact which had come up, that भाई देखो अगर 4 साल के बाद ये बाहर निकल के आ गया तो सब बोलेंगे यार तो बेकार है, तो 4 साल से बाहर निकल के आ गया। और गांव के अंदर क्या है, इसका उतना मान मर्यादा नहीं होगा when you compare it for a person who's going to continue in the army. So this is something which So it's a point. Yeah, your view on it. yeah, this is exactly where the government now needs to step in, because this is a social stigma which the people in our villages do not want it, and rightly so, because in the army is great grandfather, grandfather, father, son, and uska pushti, even whether they're martyred in war or any counterinsurgency action, you will still find that person's son or daughter wanting to join. You find so many people in NDA, IMA, OTA, everywhere. So, children from these families wanting to, ladies, I would say the ladies of this thing, the way they join, the Veer Naris want to join and the armed forces, and there are special vacancies for these Veer Naris and they become officers in the Indian Army. So there is a lot. There in the Indian armed forces have a tremendous amount of different love and affection and pride, and they rightly said, in the villages there is so much, and that social stigma is not desirous. What is to be now Yeah, done to ensure that that social stigma is not? Initially, there might be. Therefore, I said 1.5 years before. Now is the time to set up the Agniveer resettlement scheme right now, so that every man who steps out of that village is not seen as, some people say लड़के का शादी नहीं हुआ या ये नहीं हुआ क्योंकि कौन शादी करेगा, ये तो 4 साल के बाद इसका no. It's all just that creation. The fear has been just created. But if the resettlement of these boys and girls is done in a manner, I think these boys and girls from the villages will be seen as assets, because the villages will be transformed. Everything will transform. We must see the positive side. And I feel to be able to hey, sustain the the positive fact side, is, I go with you, sir. I go with you, sir, that the government must step forward, must, government must do, and we must yeah, do it for the good of the men of our own country, both girls and boys. Yes, sir. yeah, I think so.
I think more than right. He says, please provide English subtitles. मैं सबको बताना चाहता हूँ. In live programs, you can't put subtitles, unfortunately. That I've tried. If someone knows how to do it, let me know. I'll do it. I'm more than prepared to do it. Sir, they Uh, know you are in IIT. They know you can use artificial intelligence. right. They So, know in fact, your I want to. capabilities. मैं करना चाहता हूँ कि सबको इंग्लिश टाइटल सबटाइटल्स भी दें और सबको हिंदी सबटाइटल्स भी दें. So सर that उनको सब मालूम है, आप those कर सकते हो और आप कर भी दोगे. I'm trying. Actually, no, the system doesn't allow you to do it. That's Yeah, the problem. not so fast. So if Yes, someone yes. knows how to do it, let me know, and then I will implement it. Okay, this is a interesting question. I have heard recently the CDS General Anil Chauhan saying in India Today conclave that one of the big advantage of Agniveer is that it reduces the reservist liability. So your views. Yeah, your views. There's no And doubt I'll give about it. my See, views after that. absolutely. There is no denying the fact that we have such a fantastic pool in the country that would have been created by the Agniveer, and the battalions have nothing against it. The commanding officers, No, no, the he's company talking about commanders reserve have nothing liability. against it. No, Yeah, no, yeah. The he's talking reserve about reserve liability. liability. Say again, sir. He's talking of reduces the reservist liability. That's the point he's Yes, making. yes. There is. It will automatically get reduced. The reservist liability will get reduced moment there, because we have a huge standing army, and we do not. The reservist liability was there at that point of time when a large number of people who left the army at 7 years of service and weren't on pension, and they were on reservist liability with certain benefits which had to accrue to them while they still continued to be a reservist. There's hardly any reservist liability today. There's no reservist liability whatsoever. They No, all leave that's without the any this thing. no. The So, point is this. Though the CDS has said this, in the current state, just think you have only 25% being retained. yeah, 75% is going out. So the 25% core which is going out is the permanent cadre. They might have some reserve label liability, but the others don't have. So tomorrow, if you want, you have a very lean reserve force to tap from. There's a problem in this, yes, which I think General Anil Chauhan has probably, being in the open public in an India Today conclave, he's glossed over it. And I think there's a need to relook at it. Yes, when the thing changes from 25% to 50%, automatically your reserve pool will increase. So that actually goes to support what you have been saying, that we need to increase this retention from 25 to 50% or 75% or graded, whichever way that modification has to take place. Because in the current thing of 25%, it is, what shall I say, not even it is not viable. The second thing is, why shouldn't we have them for some reserve liability, even if it's at 75%, even if it means paying a little or giving him some benefit? Give him for 6 months. The reserve liability could only be for 6 months to the next batch or to 1 year. So I think there is there is scope for us to revisit, and this reserve liability scheme is something which someone asked in that India Today conclave, and the CDS has answered. But I'm not with the CDS on this. Let me be very upfront, because I think there are issues which have not been considered, or they might have been considered for which there are no answers which have been given, because this issue had not come up. I think it needs a little more thought, right? Amitesh, I'll leave it at that. Unless you have anything else to add, we'll go to the next question. no, nothing. You're absolutely right. The reservist liability could have a rethink of what has been said, and probably when we meet the CDS next, we'll broach the subject and get a clarification also. Yeah. We need to do something on that. There's no doubt. Yeah, there's some question about some view by Praveen Swami on something. I didn't see that. I wanted to see that. Praveen Swami spoke, the force editor, he spoke on different aspects.
He said that probably Anil Chauhan, well, that is his view. I wouldn't like to comment on No, what no, he no, had no. said. I'm not talking about Praveen Sani's view on Anil Swami. Chauhan and all that. That is, yeah, Yeah, yeah. Sani. That's all as an idiot. Mm, I'm openly telling you, mm, all of you. If you come mm, start quoting people like Praveen Sani out here, then you don't have to mm. come to this channel. आप उसी channel को Yeah. जाके देखिए. He's a, no, this is about Praveen Swami, who's been the editor of print. Acha, yeah, there's another जी, one. Praveen ओके, Swami is also हाँ, there. वो Yeah. प्रवीण स्वामी है ये. इसके बारे में एक ये, yeah, he says Praveen Swami, security editor of the print, had written in favor of legalizing mercenaries as people are joining French Legion and etc. on their own. Your opinion? Look, let me put the thing in perspective. Who joined the French Legion? The people who join the French Legion are only from the francophone colonies or francophone societies. Not everyone can go Mm. and join the French Legion. Even from India, people who join the French Legion are only from Pondicherry who are allowed, or Diu Daman who are allowed. I can't go and join the French Legion. Okay. So this thing that, legalizing mercenaries, they don't take mercenaries so easily. No, okay. This mercenary business is only a problem of Ukraine, Russia, and maybe tomorrow in these private security agencies and all that. So I The don't Wagner know group. under Wagner Group and all that, which we have examined. I examined this whole thing with General Dushyant Singh. I've done a lot of Mm, research on no. this. Let me tell you, right? What this gentleman Praveen Swami is talking, I think he's talking. To be very honest with you, I think he's talking without understanding the ramifications. Many of these civilians talk. It's very nice to say, you know, make mercenaries, take them in your thing, and use them as mercenaries. Why India ऐसे नहीं चलता. India is a democratic state. We are not a colonial army. We are an army which defends our country. Okay? There are some रीत रिवाज हैं हमारे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक ही चल सकते हैं. यू कांट से भाई मर्सनरी आर्मी खड़ा करो. कल के दिन हर एक बाहुबली अपना मर्सनरी आर्मी खड़ा कर देगा. तो ये जो ऐसे जो व्यक्ति बोलते Legalizing it हैं, will be another problem. उसको अगर legalize प्रॉब्लम. करेंगे, अभी now these people who run away from Punjab and all over this thing, and Hyderabad वो also सब जाके जाके joined the Russians as went as tourists and got absorbed, or maybe they हाँ, knew or they didn't know what. You can't sort of legalize all these kind of. This is not done. No, I don't think we are an old civilization. As you rightly said, we have our old standing, and we are a power to reckon with. We cannot afford to have these kind of things like yeah. legalizing So uh, yeah, that's a very important thing. Okay, now look at this. Sir, I work in Agniveer Vayu exam conduction. There's a sharp decline in interest of candidates, which is very concerning. Also, the applicants for the exam has dropped by half. Yeah, this is a good feedback. And my view is this. I hope someone sees this, and I'll forward this to the concerned services. Right? This is a good feedback which you have given, Aditya. Thanks a lot, because there's something which means that this system, this Agniveer program or the Agnipath scheme needs a modification. Right? It's a good thing. Thanks for this. Yeah. Oh, this is one thing. Will they be continuously assessed, or will there be only a final assessment? Plus, I think there should be a standard criteria passing which shoulder should be retained regardless of vacancy or bleak quota. So just give your views on it. I think a lot of this will get said resolved with 50% this majority. the system is absolutely transparent. They will be continuously assessed and will be absolutely open. There is just no question that someone been someone's favorite or a thing has got denied and that he ought no. No, we are quite aware that such a situation may crop up, because if the retention is 25%, the competition will be extremely tough. If the retention is 50%, it will still be tough, because all those who wish to be retained may have to go off. So it's not like that. So there is no denying the fact. It is like a short service commission. In a short service commission, when the officers join, they know fully well that they joined a short service commission. And now to say that, well, I've joined a short service commission, now I want permanent commission. Well, everybody won't get permanent commission, but some of them will definitely get permanent commission. So they will
will be no discrimination. But the ones who do not get permanent commission, for whatever the reason it is, he will move out gracefully and do the. And therefore, there is total transparency. Similarly, for those anyone who says, "Why was I not retained?" Yeah, well, here's the computerized this thing. These are the ACRs. This is what it is. These are the course results. This every. So he knows there will be never. An army and armed forces, for that matter, are absolutely transparent. They are fully aware that people might just go tomorrow. No, no, that boy was better than me, or I was better than him. I have been thrown out, and no, there's so many factors taken into consideration, and the assessment will be a regular, continuous assessment of the individual, and not at the last minute. Yeah, Don't worry, the army knows how to get the best and take the best and yeah. be transparent about it. Army is good, just don't worry. Okay, I'm taking this question, Vicky Molfa, for the first time. Agniveers, the young blood, will it encourage the tactical ability or challenge the surprise of the commanders? See, they are Yeah, very good. Let me tell you, whether it's a normal boy, because as I told you, it's 10 plus 14 plus 7. So it's almost 31 weeks of training. Earlier, it may have been another 10 weeks. There was a lot of break. So there used to be coming, there used to be a break. Afternoons would be given to games. There were little activities. All those little activities have been suppressed, curtailed, and ensuring the professional, the physical fitness, the mental robustness, the firing, the military drills, the military bearing, the military knowledge, the military ability to reply, answer, accept. All that is being, a lot of time is being spent on it. So the Agniveer, when he steps out into the unit, does not feel wanted. He is fully equipped, and therefore he will be seen as an asset and never as a liability. Which I think yeah. the two batches that I have seen, they have proved themselves, and the training centers have really sweated hard to train them, and the commanding officers are grooming them very well. Yeah. Okay. The last question. Okay, Shaikat Gosal. Agniveer is a very good and well calculated scheme which will reduce payroll expenditure. Best soldiers will retain and system. Shortage of staffs will short. Rest will be left for future reserve. Let me tell you this. Okay, Shaikat. You seem to be very fond of this scheme. I am not. Let me be very honest. Okay. There are good parts of the scheme and there are bad parts of the scheme. The bad parts of the scheme are very bad. And I have highlighted them in absolute no uncertain terms. The good parts of the scheme do not overshadow the bad parts of the scheme as it exists. But the scheme has been brought in. We have to make it a success. The onus of making it a success is ours. जो लोगों को चूरन बेचा गया कि ये करेगा वो करेगा ये कुछ नहीं करेगा if we don't make an effort like what General Sanjay Kulkarni said the acid test of the scheme is yet to come because the acid test of the scheme is how will you handle those people who are going out the current thing two major issues of the scheme before is that first the 25% retention is too little it serves no good to either the society or it doesn't do good to the army at this point of time. Okay, it actually does bad to the armed forces. Right. The second, in the long run, immediately there's no effect. In the long run, the acid test of the scheme is like what General Kulkarni said: is when you send these people out. Both these are left unaddressed, and they need to be addressed. But having said that, there are indications that the government is addressing the first thing by increasing the retention to 50%. That's the indication which we have got. But will that happen? When will that happen? Is a matter of we'll have to see aage jaake. As far as sending them out, we have to now start like what he said. We have to set up an Agniveer, resettlement directorate. So all that is work in progress. So let's not go overboard on Agniveers. We should not also say that's the worst scheme. It is there. We have to stand by it and make it successful. Your last words, Sanjay. Absolutely, I'm with you on this issue that it's a scheme.
which is a great boon, a great success if the resettlement is addressed, and at the same time, as regards the training is concerned, as regards the retention is concerned, as regards making them do what we want them to do without compromising our combat capabilities or a cutting edge, they are definitely we are getting the best. As regards the army as an organization is concerned, if out of four we're going to keep one, it's a fantastic. If we can retain two, because the way the training is being imparted and the way the selection is being done, the written test is there, the physical test is there, followed by the medical test, followed by the training in the center, all of it being done with so much of sincerity, devotion, dedication, that it would be very difficult even to leave one. To be honest with you, you will suddenly feel that all of them are good. But yes, amongst the good, better, best, if you have to retain the best, the better and the good must be given, and the confidence that even if they step out of the armed forces, they lose nothing. They are one of those of which India is proud of, and they will deliver because we want them to deliver, because we've trained them extremely, extremely hard, and because India itself is going in a rising path. India itself is going to be the third largest economy. India itself is going to be seen as a global South leader. In that context, how we cannot, in any case, would want our citizens to suffer, be it girls or boys. And let me assure, the government is fully aware of it. There will be no looking back. All these Agniveers, whether in the armed forces or having stepped out into the civil street, will be seen as assets. And so much so, I have somehow fear कि आर्म फोर्सेस वाले फौज छोड़ करके बाहर ना चले जाए. अरे ये अग्निवीर बन जाओ, इतना बढ़िया सरकार नौकरी देती है, करती है. We'll wait for that. Right? We we'll should wait for that. I don't. achieve We that. should. We can. Yeah, we hope to achieve that. But will Yeah. that be achieved? Because I've not seen any government doing that so far. It will take a very special Hoega, sir. effect of the government. Our government, yeah. So we'll leave that Yeah. ahead. Right? But we should work for it now. We should not leave We it should on work. the fourth year. Now in the 2.5, 3 years, that Agniveer We should start Resettlement working for Directive it. must come up. Yes, must come Yeah. up, sir. Yeah. And lastly, I must tell all of you why I called Sanjay Kulkarni. Why? Because he has been rooting for this scheme. He's a proponent of this scheme. I have my reservations on this scheme, and we've been able to discuss this. Right? I still have reservations on this scheme. Okay, because none of our governments, whichever government it is, have been good at these things, and there's a certified failure of all governments from the Fifth Pay Commission 20 years back. Okay, so whether this will happen the way we are thinking or we are visualizing is up in the thing. So, but we must discuss, we must put our thoughts forward and bring it to everyone's notice so that people start noticing and start taking corrective action. And I hope sincerely that the scheme is as good as what General Kulkarni says, because that will benefit the nation. Right? Final benefit is for the nation. Whatever is good for the nation, if it happens, it's good. If it is bad for the nation, it's bad. As simple as that. Right? Anything else, Sanjay? Otherwise, we'll say thank you. Thank you very much, sir. I think you've really explained it so well to everybody. And therefore, the caution is, as I have always believed, sir, irrespective of whatever good it is, the acid test is the resettlement of our Agniveers. If the Agniveers are resettled properly, I think it's a real win-win situation. And one could have asked for disciplining our own society in the manner in which we have gone about. So this is not a conscription, it's a volunteer, and a volunteer which will help India grow, become rich, become powerful, and become great discipline, because that is very important, and also conscientious, sincere, honest, all those values that we look for in a man, in a person, all of them will really come out if the resettlement of the Agniveers is being done in a manner that everybody is looking forward to. It's a great, great scheme, and I think we are on the right path. Agnipath, but the right path. Yep, I hope so. Right? I hope it happens, honestly. Right, with this, I'll close today's testing. I want to tell everyone, those questions whom we've not answered, please put these questions in the straight comments. Just copy and paste them in.
and I'll take those I'll take those questions and answer them over the weekend. On Sunday, I'll go over into an extended session and answer each question of yours. Right? With this, thanks a lot, General Sanjay, for coming Thank you, and sir. talking about Thank you, this. sir. And it was a pleasure. We spoke about Pakistan and we spoke about Agniveers. And I thank everyone who's viewed this, who's going to view this, video. You make it And I would interesting. request, You make it interesting, sir. we make it interesting, and we need to have more such discussions. And I would like more to come and join in and subscribe to this channel. And please tell your friends also to subscribe. And if you like this discussion, please press that bell icon, and so that we get more traffic into Gunner Shot. Thank you. Good evening and Jai Hind. Jai Hind, sir.